हमेशा असम आके बहुत अच्छा लगता है और आज शपथ ग्राम आने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। वहाँ पे यंग स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने की मुझे मिली अपॉर्चुनिटी, उनको ये बताने की अनीमिया यानी कि खून की जो कमी होती है ये बहुत आम मामूली कारण हो सकता है, विटामिन की कमी हो सकती है, लेकिन प्रॉपर टेस्टिंग जैसे डॉक्टर ऋषिकेश ने बताया कि ब्लड शुगर टेस्ट करना चाहिए, बीपी टेस्ट करना चाहिए, वैसे ही अगर अनीमिया के सिम्टम्स हों तो एक प्रॉपर कंप्लीट ब्लड काउंट की जांच करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये एक सीरियस बीमारी का भी एक लक्षण हो सकता है, ब्लड कैंसर का लक्षण हो सकता है, और ये किसी भी उम्र में, किसी भी आयु में, आदमियों में, औरतों में, बच्चों में, किसी को भी हो सकता है। पर अच्छी बात यह है कि आज की डेट में ब्लड कैंसर का बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल है। इंडिया में अफोर्डेबल ट्रीटमेंट, जेनेरिक मेडिसिन के द्वारा हम हर प्रकार के ब्लड कैंसर का बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट पेशेंट्स को ऑफर कर सकते हैं, लेकिन टाइमली डायग्नोसिस और टाइमली रेफरल जो ठीक स्पेशलिस्ट होते हैं, जो ब्लड की बीमारियों के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आम जनता की अवेयरनेस कि ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत आभारी हूँ शपथग्राम कॉलेज की और शाश्वत मेडिकल सेंटर की, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपनी बात सामने रख सकें। थैंक यू। আজি যিটো সজাগতা হ'ব হেল্থৰ বিষয়ে হয়তো যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰী ভালকৈ যদি শুনিছে নিশ্চিতভাৱে মানে ইহঁতে লাভৱান হ'ব আৰু লগতে আমিও আছিলোঁ, আমিও অলপ লাভৱান হ'লোঁ। আৰু এনেকৈ দিল্লীৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াত মানে কোনো ধৰণৰ বিজ্ঞাপন নোহোৱাকৈ ইয়াত ভালদৰে আমাক বুজাই গ'ল ৰিগাৰ্ডিং এনিমিয়া আৰু ব্ৰেইন ষ্ট্ৰক ইয়াৰ বিষয়ে, যিটো সচৰাচৰ আমি ইয়াত একো গমেই নাপাওঁ ক'বলৈ গ'লে। আজি যিটো মানে সজাগতা যিটো প্ৰগ্ৰাম যথেষ্ট উপকৃত কৰিলে আমাক। ধন্যবাদ। ডক্টৰ ঋষিকেশ চক্ৰৱৰ্তী আৰু তেখেতৰ মিছেছ দিল্লী বেছ ডক্টৰ মেক্স হস্পিটেলত নিবেদিতা ধিংৰা, এই দুইজনে যি আমাৰ কলেজত আহি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত হেল্থ ইছ্যু লৈ বিশেষভাৱে যে তেওঁলোকৰ যিটো এনামিক কণ্ডিশ্যন থাকে আমাৰ ছোৱালীবোৰ বা তেওঁলোকৰ যিটো হেল্থ ইছ্যুজ আছে, কেনেকুৱা মানে সজাগতা আনিলে এইটো ইম্প্ৰুভ কৰিব পৰা যায়, তাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ প্ৰগ্ৰাম আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তত্ত্বাৱধানত ডক্টৰ মুনমুন বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্বত আৰু আমাৰ IQCৰ নেতৃত্বত এই প্ৰগ্ৰামটো আয়োজন কৰা হৈছিলে। এনেকুৱা প্ৰগ্ৰাম আমি বছৰতে কমচে কম 2বাৰ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কেন্দ্ৰিক কৰি আৰু আমাৰ সমাজত থকা মানুহবোৰ, যিবোৰ মানুহে ভাল মেডিকেল ফেচিলিটি পাব নোৱাৰে বা তেওঁলোকৰ সেইটো ক্ষমতাৰ বাহিৰে আছে, তেওঁলোকে যে যদি ইমিডিয়েট ষ্টেপটো লয়, যদি ষ্ট্ৰোক হ'ল কেনেকুৱা কি কৰিলে ভাল হ'ব, ক'ত গ'লে ভাল হয়, সেইবোৰ যদি সজাগতা আহে তেতিয়াহ'লে আমি ভাবোঁ যে আমাৰ ছ'চাইটি নিশ্চয় সেইফালৰ পৰা এটা লাভৱান হ'ব। এই কামৰ কাৰণে মই এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টক শলাগ লৈছিলোঁ। ধন্যবাদ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।